સર્કલ પાસે જે એક્સિડન્ટ થયેલો છે એમાં જે ગાડી હતી એ સંગમ પાસે મુક્તાની તરફ આવી રહેલી હતી અને ઓવર સ્પીડિંગમાં આવી રહેલી હતી એ ગાડી, જેના કારણે ત્યાં એક્સિડન્ટ થયેલો છે। સ્થળ પર એક મહિલાનું મૃત્યુ થયું છે, અન્ય 4 જણા ઇન્જર્ડ છે જેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવેલા છે। આ બનાવ અંતર્ગત સ્થળ પછી જ રક્ષિત રવીશ ચોરસિયા નામનો જે વ્યક્તિ છે જે ગાડી ચલાવી રહ્યો હતો એ આરોપીને અટક કરી લેવામાં આવેલો છે। પીસીઆર ત્યાં પહોંચી તેને અટક કરી લીધેલો છે। આ જે આરોપી છે રક્ષિત ચોરસિયા એ એમએસયુમાં લોનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે। એની સાથે એનો મિત્ર હતો જેનું નામ છે મિત પ્રાંશુ ચૌહાણ, જેની ગાડી છે અને એ પારુલમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે। બંને મિત્રો છે અને ઓવર સ્પીડિંગથી ગાડી મુક્તાની તરફ जई रहे थे ત્યારે एक्सीडेंट बना। के माध्यम से यह बात पता चली कि एक कार जिसने एक के बाद एक 3-4 अकस्मात कर कई सारे लोगों को गंभीर रूप से इजाग्रस्त किया है। अभी तक जो हमारे पास समाचार मिल रहे हैं उसमें एक आध व्यक्ति को तो हमने खो भी दिया है और इस प्रकार का गंभीर रूप से अकस्मात कर वो पुलिस की अभी हिरासत में है और कारेलीबाग पुलिस ने समयसर वो कार्यवाही भी की है। नशे नहीं किया था पहले तो ये, उसके बाद मेरी गाड़ी जो थी वो फ्रेंड की थी। हम लोग गए थे आगे गधेड़ा सर्कल से निज़ामपुरा के पहले ही करेली बाग पड़ता है। करेली बाग में बड़ा सा गड्ढा था और वहाँ पे एक कार थी और एक स्कूटी थी, क्योंकि लेन लाल थी लेकिन सब जा ही रहे थे। लेकिन जैसे ही निकले वो लोग ब्रेक मारे और हल्का सा गाड़ी टच हो गई उस पर, और इसका एयर बैग इतना सेंसिबल था कि एयर बैग तुरंत खुल गया और पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। आगे कुछ व्यू दिख ही नहीं रहा था। वो मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला। कल तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था, कल खुद मैं इधर ही था। और जो भी वो महिला है मैं उनसे मतलब उनके पूरे परिवार से मैं मिलना चाहूँगा सबसे पहले, और जो वो कहेंगे वो करना चाहूँगा।